अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ जान मोहम्मद होर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स। देखें, कोई भी अकाउंट मेंटेन करना होता है तो उसमें सबसे पहले एक फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं कि फाइनेंस किस तरह होता है, फाइनेंशियल चीज़ों को डिस्कवर किस तरह किया जाता है, उसको अरेंज किस तरह किया जाता है और ओवरऑल फाइनेंस का जो सिस्टम होता है उससे। तो आज हम इस सारे प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद उसमें क्या चीज़ें हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो ऑब्जेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लीटिंग द अकाउंटिंग साइकिल, एंड वी कवर्ड दीज ऑल टॉपिक्स इन दिस. First of all, it's preparing financial statements, closing entries and trial balances, and the next one is profitability and equality evaluations, adequate disclosures. So the first we discuss the overview of the accounting cycle. ओवरऑल अकाउंटिंग साइकिल है क्या, चीज़ क्या है, मतलब जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है वो किस तरह चलता है। मतलब ए टू जेड हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं ना तो उसमें प्रॉपर होता है कि हम यहाँ से स्टार्टअप लेते हैं, ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें आती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी यही चीज़ें हैं। तो देयर आर 8 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, एंड the first one is generalizing transactions, and the second one posting to ledger accounts. The third one is preparing a trial balance. The fourth one is making adjusting entries. After that, preparing an adjustment trial balance. The next one is preparing financial statements, then generalizing and posting closing entries. And the last but never least, preparing an after closing trial balance. So now we can discuss these all steps in separately. So move to the next slide. The next one is preparing financial statement. Basically है क्या चीज़ ये, ठीक है ना। तो जो प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसके जो मेन बेसिक हैं, कोर, वो 3 हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट इट समराइजेस रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड. कोई भी थोड़े से टाइम पीरियड के लिए जो हमारी रेवेन्यूज़ को समराइज़ करता है, रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस जो हमारे अखराजात को समराइज़ करता है, उसका काम होता है इनकम स्टेटमेंट. एंड द नेक्स्ट वन इज़ स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स. इट मीन्स इट ट्रैक्स चेंजेस इन रिटर्न अर्निंग. एंड द थर्ड वन इज़ बैलेंस शीट. इट मीन्स डिस्प्लेस फाइनेंशियल पोजिशन एट पीरियड एंड. एंड द नाउ next one is what is importance of comparative analysis. It highlight the role of comparing financial statement year to year. It means annual budget or annual financial statement after the end of the any year. Okay, so now we move to the next. The next one is notes accompanying financial statements. So the first of all, what is the purpose of notes? The purpose of notes, it adequate disclosure principle. It also explains significant details such as impairments, accounting policies. And the next, best practices for notes. The first one is clarity and transparency. The second one is relevance for interpreting financial statements. And the next one is example. So the best example for that is notes on best buying impairment expenses. Now we move to the next slide, and the next slide is closing entries and after closing trial balance. So इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं एंड आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ये सब क्या चीज़ है. So first of all, there are different steps to move to the next. So the first one is close temporary accounts. After that, first step 1 is close revenue accounts to income summary, and after that we close expense accounts to the income summary. After that, close income summary to retained earnings, and the next one is close dividends to retained earnings. And the next one, and our second topic is after closing trial balance. Ensures ledger accounts are balanced, and the next one is prepares accounts for the new period. Okay, and then now we move to the next slide, and the next slide is
evaluating profitability and liquidity. So the key matrices are profitability क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट नेट इनकम परसेंटेज रिटर्न ऑन इक्विटी. हमारी जो इक्विटी है उसके ऊपर जो हमें परसेंटेज होता है या जो हमारी इनकम है उसके ऊपर इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी. एंड द सेकंड वन इज लिक्विडिटी क्या है, वर्किंग कैपिटल करंट रेशियो. सो इफ़ अगर हम एक मिसाल लेते हैं, यहाँ पे जो मैंने एक मिसाल एग्जांपल जो यहाँ डिस्क्राइब की हुई है उसमें क्या है कि एक हमारा टोटल रेवेन्यू है वो क्या हुआ है 25,500. ये हमारा टोटल रेवेन्यू है और इस पर हमारा जो एक्सपेंस आता है वो क्या है 20,400. इट मीन्स that we are going to the profit and the profit is all about okay. So inside from net income to the ratios. So यहाँ पे मैंने साइड में एक रेशियो भी दिया हुआ है कि हमारी टोटल रेवेन्यू वर्सेस टोटल एक्सपेंस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड and the next slide is ethics and corporate governance. Ethics. So what are the importance of ethics and corporate governance? The importance of transparency in reporting. मतलब हम कोई भी चीज़ रिपोर्ट करें तो उसमें ट्रांसपेरेंटी, उसमें सच्चाई, ये सारी चीज़ें लाजमी होनी चाहिए. एंड द नेक्स्ट वन इज़ कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस लाइक Sarbanes-Oxley. And the next one is what are the challenges in ethics and corporate governance. So the challenges are balancing educates disclosure with competitive confidently. मतलब कोई भी चीज़ हमारी होती है, कोई भी हमारे बैलेंसेस, हमारे बैलेंस शीट्स होती है, हमारे अकाउंट स्टेटमेंट्स, उसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए और वो चीज़ें सिक्योर होनी चाहिए हमारे खुद तक. Now we move to the next slide. So the first of all supplemental tools. Which tools are we use? The first one is use of worksheets, then planning for future transactions, adjusting entry simulations, modern applications. मॉडर्न एप्लीकेशंस क्या होती हैं यहाँ पे, वो उसमें ट्रांजेक्शंस टू कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर इनहेंस एफिशिएंसी. इट्स ऑल अबाउट मॉडर्न एप्लीकेशंस. नाउ आई कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन. सो the accounting cycle ensures systemic financial reporting. It notes and disclosures are critical for informed decision making. It also evaluation matrices like profitability and liquidity is essential for stakeholders. It's all about, and if you have any confusion or any question, then you can text or comment on this video and I will try my best to help to you. Thank you so much. Allah Hafiz.